Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to the channel. I'm Sejal Agrawal and here are the three big stories we'll cover today. Story 1 में we'll discuss Donald Trump's sharp comments on India dumping cheap rice into the US which triggered a sell-off in Basmati stocks. Story 2 में we'll discuss Indian IT stocks that slipped 1 to 4% even though the markets expected a Fed rate cut tomorrow. And in story 3, Swiggy gained 3% after shareholders approved its 10,000 crores QIP with over 99% votes in favor. So let's dive in. तो स्टोरी 1 में वील डिस्कस कि कैसे एक सिंगल स्टेटमेंट जो आई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसने एक सेल ऑफ ट्रिगर किया मार्केट में इंडिया के टॉप राइस एक्सपोर्टर्स में and with some basmati stocks crashing nearly 10% also intraday. So we'll see exactly what happened, what did Trump say, why did Indian stocks reacted so violently, and could this lead to a fresh trade war? So let's break it down. So during a White House roundtable on farm assistance, Donald Trump ने directly attack किया Indian, Thai and Vietnamese rice exporters पे and he accused them of dumping cheap rice into the US market. अब ये स्टेप आया while announcing $12 billion bailout for struggling American farmers, which is a politically sensitive group ahead of the US midterm elections. ट्रंप ने उसके बाद ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से ये भी पूछा that do they have an exemption on rice, clearly hinting on fresh tariffs, और उसकी वजह से मार्केट्स ने पैनिक किया. इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स की बात करें तो इट गॉट फ्री फॉल ऑन ट्यूसडे. Kohinoor Foods fell around 9.9%, hitting a 52-week low. Then LT Foods, which is Dawa, that dropped 6.5%. KRBL dipped 2% around. Chamanlal Sethia dropped around 4%. GRM overseas was down by approximately 6%. And Adani Wilmar Agribusiness and Kaveri Seed also corrected 2 to 3%. वॉल्यूम्स काफी ज्यादा सर्च करी अराउंड 3 to 5 टाइम्स ऑफ द डेली एवरेज जिसने एक पैनिक सेलिंग को लीड किया. इट वाज फॉलोड बाय अ स्मॉल बार्गेन बाइंग एंड कुछ स्मॉल कैप्स लाइक कोहिनूर उसकी नियरली 10 करोड़ मार्केट कैप गॉट वाइप्ड आउट इन आवर्स. इवन दो यूएस लेस देन 5% ऑफ इंडियन बासमती एक्सपोर्ट्स को ही अकाउंट करता है, मार्केट ने सिंबॉलिकली इसको काफी इंपॉर्टेंट और प्राइस सेंसिटिव रखा. इंडिया के एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो FY24 में 2.3 लाख टन में से आउट ऑफ उतना यूएस गए थे आउट ऑफ 52.4 लाख टन टोटल बासमती एक्सपोर्ट. तो मार्केट ने इसको इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंस दी? क्योंकि अगर फ्रेश टैरिफ्स लगते हैं तो उसकी वजह से एक हायर एक्सपोर्ट कॉस्ट हो जाएगी. देयर वुड बी मार्जिन प्रेशर्स ऑन बासमती एक्सपोर्टर्स एंड डाइवर्जन ऑफ शिपमेंट्स टू द वोलेटाइल मार्केट्स लाइक ईरान, अफ्रीका. Also there would be lower realizations which is already down 15% year on year. And this comes at a time when the global rice market is facing oversupply, putting additional pressure on pricing. But इस panic driven sell off के बाद basmati stocks they staged a sharp intraday recovery. Kohinoor Foods close हुआ 1.8% high, KRBL jump किया 3%, Chamanlal Sethi again 1%, GRM overseas ended flat at 0.03%, Kaveri Seeds added 1.96%, while LT Food was the only major name जिसने red में finish किया. So overall इस न्यूज के बाद और एक इतना ज्यादा पैनिक ड्रिवन सेलिंग के बाद कहीं ना कहीं एक शार्प रिकवरी होते हुए भी दिखी स्टॉक्स में. अब बात करते हैं आज की सेकंड न्यूज के बारे में जहां पर मेजर आईटी स्टॉक्स काफी प्रेशर में दिखाई दिए विद मेन नेम्स लाइक कोफोर्स, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस स्लिपिंग नियरली 1 to 4%. एंड ये सब कुछ हुआ डिस्पाइट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग यूएस फेड कट टू अनाउंस टुमारो, दैट इज टुडे. So why the IT stocks are falling when a rate cut should normally help tech and growth sectors? Let's break it down that what is happening. So by the late morning yesterday, IT index fell किया over 1.2% and it was the second straight day of losses. अगर हम leaderboard देखें तो Coforge, TCS, HCL, Wipro, Infosys, Tech Mahindra, LTI, Mindtree, Persistent सब 1 to 4% तक डाउन थे. तो किस रीजन की वजह से इन्वेस्टर्स ऐसा कर रहे थे? दो बड़े रीजंस थे, एक फेड मीटिंग एंड सेकंड द वीक फंडामेंटल्स इन द आईटी डिमांड साइकिल. अगर यूएस फेडरल रिजर्व की बात करें तो करंटली दे आर होल्डिंग इट्स एफओएमसी मीटिंग टुडे एंड द एक्सपेक्टेशन इज कि फेड अनाउंस करेगा एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट. एंड नॉर्मली एक रेट कट काफी पॉजिटिव होता है, उससे सेंटिमेंट बूस्ट होता है बिकॉज इट लोअर्स द बोरिंग कॉस्ट, इट सप्लाई द ग्लोबल इक्विटीज. बट इस टाइम पे एनालिस्ट एक्सपेक्ट करें एक हॉकिश कट. नाउ व्हाट डज अ हॉकिश कट मीन? फेड रेट कट करेगा, दैट इज द एक्सपेक्टेशन, बट
साथ ही में वो सिग्नल नहीं करेगा किसी भी और रेट कट पे कमिंग सून. ऑल्सो इट विल वार्न दैट इन्फ्लेशन रिस्क रिमेन एंड इट विल कीप द फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट. दैट्स व्हाई सेंटिमेंट इतना ज्यादा वीक टर्न आउट किया. ऑल्सो अगर हम इंडियन आईटी कंपनीज की बात करें तो वो 60 to 70% अपना रेवेन्यू यूएस से कमाती हैं. सो एनीथिंग जो इम्पैक्ट करेगा यूएस की स्पेंडिंग, यूएस के कॉर्पोरेट बजट और यूएस के इकोनॉमिक आउटलुक को, वो डायरेक्टली हिट करेगा डील पाइपलाइन को इंडियन कंपनीज के. हॉकिश फेड कट अगर होता है तो एक स्लो यूएस इकोनॉमी हमें देखने को मिलेगी. देयर वुड बी लोअर टेक स्पेंडिंग, देयर वुड बी डिलेड आउटसोर्सिंग डिसीजंस, क्लाइंट कटिंग हो सकती है एंड लॉन्ग सेल साइकिल वुड बी देयर. दैट इज व्हाई आईटी स्टॉक्स ने इतना शार्प रिएक्शन किया. ऑल्सो अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें जो कि काफी प्रेशर में है क्योंकि ग्लोबल क्लाइंट्स अभी दे वांटिंग कि cut ho spending on non-essential IT projects. They have delayed the digital transformation deals. They have reduced the vendor budgeting and slowed down the hiring. On top of that, AI और automation काफी ज्यादा disrupt करे traditional IT services को क्योंकि अब clients को smaller teams चाहिए, cost saving चाहिए, outcome based billings चाहिए, and this is squeezing the older outsourcing model. अभी पूरी जो eyes हैं they would be on the Fed statement tomorrow and US tech spending outlook for 2026 and AI transition and new contracts. But by the end of the session अगर हम देखें मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक most of the IT names still losses में ही थे. कोफोर्ज डाउन था by 3.99%, TCS स्लिप किया 0.87%, HCL टेक ड्रॉप 1.84%, विप्रो फेल किया 1.52%, इन्फोसिस डिक्लाइन किया 0.73%, ऑल्सो टेक महिंद्रा फॉल, LTI माइंड ट्रेंड परसिस्टेंट. बट टुडे IT sell off हम ये नहीं बोल सकते. It wasn't about the numbers, it was about the fear of what Fed might say and how the global spending could tighten further. And now let's move to our last story for today, which is about Swiggy का stock rise about 3% intraday to 399.4, जिसके बाद शेयर होल्डर्स ने और ये इसलिए हुआ क्योंकि 10,000 करोड़ का QIP कंपनी की तरफ से आया है. एंड दिस मार्क्स स्विगी फर्स्ट मेजर फंड रेजिंग सिंस स्टॉक लिस्ट हुआ है नवंबर 2024 एंड इन्वेस्टर्स ने क्लियरली इस मूव को काफी पॉजिटिवली लिया है. अगर हम देखें तो शेयर होल्डर वोट जो थे ऑलमोस्ट वन साइडेड थे. 967 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था एंड 189.62 करोड़ वैलिड वोट्स कास्ट एंड 99.48% वोट्स फेवर में थे. रिमोट ई वोटिंग की बात करें तो सिर्फ उसी में ही कंट्रीब्यूशन 185.55 करोड़ वोट्स का था, अकाउंटिंग फॉर ओवर 97% ऑफ द वोट्स कास्ट. एंड इसकी वजह से इस अप्रूवल के साथ स्विगी अब इशू कर सकता है इक्विटी शेयर्स टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रेज कर सकता है अराउंड 10,000 करोड़. स्विगी ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये जो QIP है ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज किया जाएगा फॉर स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट, सपोर्टिंग द फ्यूचर ग्रोथ एंड फंड द इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द ब्रॉडर स्विगी इकोसिस्टम. ऑल्सो कंपनी ने नोट किया कि जो मार्केट एनवायरमेंट है दैट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव एंड इस एक्सटर्नल कंडीशंस जब इतनी डायनेमिक है तो दिस इज द राइट टाइम टू रेज द फ्रेश कैपिटल. सो दैट्स इट फॉर टुडेज एडिशन ऑफ डेली मार्केट रनडाउन. आज की इस वीडियो में हमने 3 मेजर न्यूज कवर करी जहां पर हमने देखा कि जो राइस स्टॉक्स थे उनमें एक फॉल नजर आया, बाद में रिकवरी थी बट द फॉल वाज बिकॉज ऑफ ट्रम्प का एक स्टेटमेंट. एंड देन वी सॉ कि आईटी स्टॉक्स डिक्लाइन हुए. यूएस फेड रेट कट की होप है बट स्टिल वो डिक्लाइन देखने को मिला. एंड लास्टली वी कवर्ड द न्यूज ऑफ स्विगी जहां पर हमने देखा कि QIP जो कंपनी ने अनाउंस किया है और फंड रेज जो कंपनी ने अनाउंस किया अराउंड 10,000 करोड़ का, उस पर एक काफी पॉजिटिव रिएक्शन है मार्केट का. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एडिशन ऑफ डेली मार्केट रनडाउन. लेट मी नो व्हिच ऑफ दीज स्टोरीज डू यू थिंक विल शेप द मार्केट्स मोस्ट इन द कमिंग मंथ्स. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.